Students, we will be talking about the service quality and the customers in this session. As we know, it is an important aspect in service response logistics. So the perceived level of quality a customer experiences with regard to the service is of paramount concern to most service industries, especially when we say in logistics. So the nature of the quality, service quality, which the customers are actually getting, that is very important from the perspective of the organization. Because if organizations, they have like some targeted service quality levels, if it is achieved, then that means actually the satisfaction of the customer is more and there are more chances of a repeated purchase. So in this regard, today elements of service quality may include sustainability. Now this is the dynamics of today's world. Sustainability can be included as a part of service quality. So what does it mean? It means that we can increase the satisfaction level of the customer, or whatever you say, like the willingness to pay for that kind of a service by including sustainability. It gives organizations the competitive advantage which is required for some services. So what sustainability means here for our services, that means to go green. It actually, being green allows a firm to stand out. That means it will give the competitive advantage. तो एक ऑर्गेनाइजेशन अगर सस्टेनेबिलिटी को अपनी सर्विसेज में इंक्लूड कर लेती है, तो व्हाट विल हैपन, दैट मीन्स के द सर्विसेज विच दे आर प्रोवाइडिंग आर एक्चुअली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली. यहाँ पर ग्रीन जो है वो सर्विस क्वालिटी की बात की गई है. सस्टेनेबिलिटी यहाँ पर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज की सर्विसेज की फॉर्म में यूज की जाएंगी. तो वो कंपेटिटिव एज देगी. ऑफ कोर्स देयर वुड बी कस्टमर्स हु विल वैल्यू सच काइंड ऑफ ग्रीननेस इन दी सर्विस क्वालिटी. तो वो जब आप ग्रीन की बात करते हैं, दैट मीन्स नो हैजर्डस केमिकल और नथिंग लाइक दैट, और रिसाइक्लेबल मटेरियल इज बीइंग यूज्ड इन योर सर्विस, देन it will have an effect on a specific segment of customers और उनकी purchase decisions को affect करता है. Okay, if you see this table, this is regarding the transportation and warehousing activities in services. So the services provided by, let's say, bank, hospitals, and the telephone centers or telephone companies. The transportation activities, for example, अगर आप बैंक की बात करते हैं तो बैंक में the movement of checks, coins, cash among branches and operation centers, or there could be the movement of checks to cities with Federal Reserve processing centers. So उसमें warehousing and inventory activities क्या हैं? As such तो कोई tangible item जो है वो या service जो है उसको आप we cannot inventory it, हम उसे inventory तो नहीं कर सकते. So the activities which are like involved in the storage and inventory would be like office supplies and coins and cash, the furniture and computers and records. So other than cash, everything would be like supporting nature. इसी तरह hospitals में अगर आप बात करें तो the movement of medical supplies to the stock rooms, transfer of patients, movement of medical record, test results and film processing, films among units. What would that be? इसमें ये मूवमेंट से आपके पास जो कि हॉस्पिटल में या ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज हैं जो कि इट कैन ऑकर इन अ हॉस्पिटल. एंड व्हाट वुड बी द इन्वेंट्री और द स्टोरेज एक्टिविटीज देयर? इट वुड बी द सर्जिकल मेडिकल सप्लाईज, फार्मास्यूटिकल सप्लाईज, ऑफिस फर्नीचर एंड द मेडिकल इक्विपमेंट. सिमिलरली फॉर द टेलीफोन कंपनीज इट वुड बी द इनबाउंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्विचेस, पार्ट्स एंड इक्विपमेंट to warehouses, and the other ones could be the transportation of construction equipment and supplies to job sites. Then the routing of customers' product to retail outlets. What could be the storage and inventory activities? It would be the parts, equipment, or the consumer products, as well as the repair truck parts and equipment and the construction supplies. So what we have here, we have like different type of transportation and warehousing services activities in service industry. तो बैंक, हॉस्पिटल्स और जो टेलीफोन कंपनीज हैं ये प्राइमरीली दे आर नोन फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. और तो जब आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं तो ये वो एक्टिविटीज हैं जो वहां पर हो रही हैं. तो वहां पर आपके पास जो इन्वेंट्री है जो कि अटैच्ड विद दैट या टेंजिबल प्रोडक्ट है विच इज एक्चुअली अटैच्ड विद दैट सर्विस, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट हाउ वुड यू एक्चुअली स्टोर इट और हाउ वुड यू एक्चुअली इन्वेंट्री इट. ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है उन एक्टिविटीज में और ये सर्विस क्वालिटी को इंक्रीज भी करता है. तो द थिंग इज
ऑर्गेनाइजेशन सर्विस इंडस्ट्रीज में सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि प्राइमरीली सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, दे एक्चुअली टारगेट सम टाइप ऑफ थ्रेशहोल्ड लेवल और अ टारगेट लेवल फॉर दी सर्विस क्वालिटी, और वो उसे अचीव करने की कोशिश करते हैं. इन आवर कमिंग सेशंस वी विल बी टॉकिंग अबाउट लाइक एक क्यू हो सकता है आपके पास. क्यू कुड बी वन पैरामीटर और अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर in order to tell whether customers are satisfied or not. Of course, if you are taking longer time, then the customer dissatisfaction would be higher. So we will be focusing on such kind of queuing systems as well, because it actually enhances the service quality. Thank you.